Uh, Good evening, ma'am. Am I audible to you? Hello, ma'am. Hello. Hello. Hi, ma'am. We're just starting with the inaugural ceremony in another 10-15 minutes. We welcome you here, ma'am. Thank you so much for joining us. It is a real pleasure. Looks like you've got a good group of people there. Yes, ma'am. As you can see, we've got a house full. You've got a full house. That's right. So we're just starting in 10-15 minutes, ma'am. Okay. All right. All right. Thank you. Thank you so much. Sorry for the delay, ma'am. No problem.
Good evening, ma'am. If you can hear me. Ma'am, we are starting with the inaugural ceremony. We want you to be a part of it. So we'll just turn around the camera. We have all the dignitaries here, including you on the stage. And we'll be starting with the ceremony now. We want you to be a part of it. Thank you. Thank you very much. Welcome to the sphere of knowledge, the place where we dare to venture into the impossible, creating the future we envision and redefining the limits of what's possible. Just like a dream, one envisaged by Raj Reddy in 1980s, the dream where AI-powered speech recognition in Indian language are now seen in Google's, Microsoft's, and Amazon's voice-based interfaces for millions of Indians. The dream that was once seen has now become a reality only because of unwavering innovation and unrelenting advancement. And to foster this spirit of innovation, our esteemed institution, Tech College, is proud to host its fifth international conference showcasing cutting-edge advancement and pioneering innovation in six pivotal domains of management, media, science, technology, education, and legal issues. And to guide you through the proceeding of this prestigious international conference, I should be, in conjunction with Amit, shall be delighted to serve as your host and facilitator, expertly navigating the complexity of this global gathering. The GEMS Educational Group, boasting legacy of over 25 years, was founded by late Sri Jagannath Gupta, a visionary philanthropist. Throughout its illustrious history, the group has consistently strived for innovations and excellence, not only in its core domains but also across every facet of its curriculum. This unwavering commitment to the progress has enabled the group to foster a culture of excellence, empowering students to reach their full potential. Established in 1993, GIMS has grown to become one of the top educational groups in India. With multiple campuses in Delhi and NCR, the group offers undergraduate, postgraduate, and doctorate programs in various disciplines, including management, engineering, law, and more. GIMS is known for its industry-focused curriculum, state-of-the-art infrastructure, and strong industry connections. The group's credentials are further bolstered by its accreditation from National Accreditation and Assessment Council and approval from AICTE, All India Council for Technical Education. GIMS has earned a reputation for producing well-rounded, industry-ready professionals who are highly sought after by top companies. Moreover, the group has established partnership with international universities and organizations providing global exposure to its students. This comprehensive approach to education has enabled GIMS to create a lasting impact on the lives of its students, shaping them into capable leaders and innovators of tomorrow. Now, it's my esteemed privilege to extend a cordial welcome to our illustrious gathering of dignitaries, commencing with our chief guest, Professor Dr. Saroj Sharma Ma'am, the chairperson of National Institute of Open Schooling in IIS Noida. We are deeply honored to have among us Professor Dr. Dhananjay Joshi, sir, Vice Chancellor, Delhi Teachers University, New Delhi. We have accepted our invitation to serve us as guest of honor. Additionally, I would like to acknowledge the presence of our director, Dr. Sachin Yadav, sir, whose tireless efforts have contributed significantly to our success. And I also welcome Miss Mary Ma'am, who will join us online shortly. She's here. We welcome her here. Thank you so much, Dr. Mary, for joining us on such a short notice. We are grateful to have you here, ma'am. For a huge round of applause for Dr. Mary. I would also like to propose a warm and respectful invitation to all our illustrious guests to partake in the ceremonial ignition of the lamp
and Venerable Saraswati Vandana, a venerated tradition of enduring significance that embodies the illumination of knowledge, the pursuit of wisdom, and the cultivation of intellectual curiosity. Ma'am, sir, please come to Saraswati Vandana. Dance performance.
Thank you, everyone. Just in information, the entire program, including the Zoom meeting, is going live on YouTube. You guys can check it out. Now, it's my pleasure to introduce Honorable Dr. Sachin Yadav, sir, Director of GIMS Engineering Management Technical Campus, Greater Noida. Dr. Sachin Yadav, sir, has exercised executive leadership over the institution's academic and administrative operations, with a paramount focus on delivering exceptional educational outcomes that fosters intellectual rigor, creativity, and professional excellence. Under his vision, the institution has established a pedagogical image that harmoniously balances theoretical foundation with practical applications, thereby empowering students to navigate complex problems, think critically, and excel in their chosen professions. Dr. Sachin Yadav sir's commitment to providing holistic learning experiences has driven significant institutional growth, including the diversification of program offering, the maintenance of state-of-the-art facilities, and the cultivation of strategic partnership with industry leaders. His leadership has been instrumental in transforming GIMS Greater Noida into a premier institute renowned for its commitment to academic excellence, innovation, and student success. Now, it is my pleasure to invite such a paragon of wisdom to take the stage. Sir, please. Professor Dhananjay Joshi ji, our special invitee, Professor Mary Lou Brent Frank, esteemed colleagues and participants. It gives me an immense pleasure and honor to welcome you all to the 5th Multidisciplinary International Conference 2024 on recent advancement and innovations in management, media, science, technology, education, and legal issues. This conference stands as a testament to the collective commitment of GIMS Group towards advancing knowledge and fostering interdisciplinary dialogue across the most dynamic and impactful fields. I would like to extend my heartiest welcome to our esteemed guest, Dr. Sharu Sharma ji, Chairperson NIOS, Professor Dhananjay Joshi ji, Vice Chancellor, Delhi Teachers University, and our special invitee, Professor Mary Lou Brent Frank, for their gracious presence on this remarkable event. A very warm welcome to our participants, faculty members, and dear students. We are gathered here today at a pivotal moment when the convergence of discipline is not just beneficial, but essential. In a world where management practices, media influences, scientific breakthroughs, technological innovations, educational advancements, and legal considerations are increasingly interlinked, it is crucial that we come together to explore and understand these connections. Our conference brings together experts, practitioners, and thought leaders from across these diverse areas.
This unique blend of perspective will, I believe, ignite conversations that will drive forward not only academic inquiry, but practical solutions and innovative strategies. I wish you all a very productive and enlightening conference. Welcome once again, and let us begin this exciting journey together. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir. We are now eagerly anticipating the arrival of our distinguished guest speaker, Ms. Maria Brand Franklin, professor at Mykonos Norris University, Lithuania. Who will be joining. A very warm welcome, ma'am. It is our esteemed pleasure to introduce a luminary in the realm of conflict resolution, Dr. Mary Lou Brand Frank, whose illustrious career has been marked by a relentless pursuit of excellence in academia, mediation, and leadership. With a distinguished pedigree that includes advanced training at Harvard and a pioneering role in co-founding transforming mediation, Dr. Frank has consistently driven conventions and expanded the frontier of peacemakings. As a fellow at the University of Georgia's Institute for Higher Education and adjunct professor at multiple institutions, she continues to inspire and educate a new generation of thought leaders. Her magnus opus, The Mind of a Pacemaker, has been hailed as a seminal work in conflict resolution, and her numerous accolades for teaching, service leadership, and diversity are testament for her commitment to excellence. Join us as we welcome Dr. Frank and be prepared to be enlightened by her insight on the title Conflict, a Challenge Facing Each of Us, Our Many Discipline and Our World. A great round of applause for ma'am. Can you all hear me? Can you all hear me now? Yes, ma'am. Okay, excellent. What a beautiful conference you've put together. I am so humbled and so terribly honored to get to join such distinguished guests, to get a chance to see the beautiful dancing, to hear the kind words of your campus director, and to look at the vision that all of you are doing. When I looked at the schedule, I see I've got about 15 minutes to talk, just a few minutes. And so I chose to want to talk with you today a little bit about something that affects all of us. I've spent my entire career in higher education, as many of you have. We are all colleagues together, just in different parts of the world. And I thought I'd share a few things that I thought might be able to help each one of us to do a little bit better. I'm going to go ahead and share my screen. And talk a little bit about conflict and how it faces each of us, our many disciplines, and how it's even affecting our world today. And today I'll talk a little, just about touch on 5 different things. What it is, what our history is with it, and why that's important, what maintains it, what skills the research says we should use, and what maybe we need to remember going forward. Ken Cloak, who's probably the foremost mediator, he's considered the father of mediation in many parts of the world. He says that conflict is really, it's a sign of cracks in the system. It's a sign that there has been something that isn't working right. It can be a warning that we need to attend to something. It's an opportunity to rethink and revision and address things in a different way. It's a reminder that we're all interconnected and that maybe we need to work together in a different way so we can resolve that conflict. When I was looking at the initial call for proposals for your program, I saw a list of many different disciplines involved. And when I listened to the list of people that are different disciplines you're going to have as part of this multidisciplinary effort, I was aware how that all of us are in this
in this together, but each of our disciplines can either be advanced by conflict or it can be disabled by it. Working so many different areas together and pulling them together to share information and to grow together can be a wonderful experience, but it can also cause us different perceptions and can cause conflict. We know from looking at our history, our common history of higher education, that it can derail us. It can add to scientific advancement. It can lead to wonderful multidisciplinary work, and it can build relationships, but it can also derail each one of those. And that's the trick. That's the clue that I think at least the field of mediation, which I work in, I'm a psychologist, but also do a great deal of work with law schools and mediation. Learning how to deal with conflict can help us deal with all of those. But conflict will impact each of us at every level. Ludwig von Bertalanffy, the biologist, back in the turn of the last century, talked about systems and how all of those systems interact with each other. That conflict at one level can impact us at another. From organizational psychology research, we know we're more likely to have conflict today because of the increasing pressures that we all have. You have it, your institution, we have it, all of the ones I work with in different parts of the world. We're supposed to adapt, we're supposed to innovate. We've got to come up with new ideas to deal with new problems. But increasing economic issues, scarcity, competitiveness, globalization, all of those things contribute to the potential for misunderstanding and the potential for conflict. Even the way we communicate with each other can lead to more misunderstanding. Organizing work in teams and all the good work that you do, and you really, I think, set a high bar for all of us to integrate and work multidisciplinarily. That in itself can create greater interdependency and therefore conflict. To get a clue to this, I'm going to draw from my field of psychology as well as mediation, because how we see the conflict determines how we're going to be able to address it. If we see conflict as a problem, well, because maybe we don't think we have the people skills to manage it, because maybe we want to avoid it, and we know from research, the more you avoid conflict, the worse it's going to get. If we're trying to avoid confrontation, or if we're trying to just solve it simply, quickly, and move on, we can get stuck in it because it never gets fully resolved. But if we choose to see conflict as an opportunity and realize that's just something that's inevitable, it's normal, it's a sign that we just need to communicate more and deeper. If we can accept and acknowledge it for what it is and realize those cracks in the system don't mean the system's crumbling, it just means we have something we need to talk about. Communication about conflict doesn't mean we're going to go to war. It just means we have some work to do. But it means we also need to pull on some of those deeper skills that sometimes, even in academia, we don't think of doing. One of my early positions, I was a dean and a vice president, and one of my early positions in higher education, I was called upon by the university system to do mediations across many different campuses. So if on a university campus there were conflicts between faculty or administrators, I would get called in to work with them. And it's amazing how all of us who are bright and gifted and talented people, how easy it is to allow conflict to get in the way of our relationships and thus in the way of our productivity, our ability to get our work done. So what maintains it?
Well, in higher education, one of the things that maintains it is the constant press for change. We all feel it. And I know the fact you're even talking about advancements in different fields means you're just like us. We are all the same in that. And sometimes that push leads to competitiveness, which can be very good, but as all of us know, it can also lead us into realms where we don't get along together and we don't function as well as teams or as individuals as we can. Universities are defined by differences. I remember I spoke early on about some of the 2020 initiatives you had and all the work that you've done as a nation in terms of multidisciplinary thinking and multidisciplinary approaches at your universities. And we admire that. But those differences also create differences in opinions, which we want, but we just need to learn to work with them. Psychology and mediation provide a lot of skills that help us resolve conflict. And probably the number one skill is listening. And that's a tough one because it sounds really simple. There are some parts of the world that actually teach people as they're growing up skills in listening. They take listening just like they do reading or mathematics or science, because they know that people are going to need to have really good skills at listening behind the words, deep listening. Our attention span has changed over the last, this is a study that was done by one of our news agencies over about even less than 20 years. Look at how our listening, our ability to listen, and the duration of our ability to give attention to something has changed because of the advent of us being so tied to our computers. Or for many of us, our cell phones, even if our computer isn't present. Just that change in the way we've learned to focus and we spend so much time in computers means we no longer have the ability to listen as well as we did just 20 years ago. That means we need to work harder because we are missing things. Some of us even think we can multitask, and every semester I get a chance to teach a class in neuroscience. And what I always tell students is our brains are not wired to think of two complex things at the same time. So what we end up doing is moving back and forth between two things. And each time we switch, we have to start that whole process of thinking that other, whatever we're wanting to do, we have to start all over with that. We can't just pick up where we left off. And then if we want to switch back again, it involves another time crunch. So we never really think of two things at once. We don't multitask. We just waste more time and create more stress in our system. Most of our time in communication is spent in listening. If we can learn to listen to each other, if we can, at least in the States, set our cell phones down and really look at each other and pay attention and be present with each other, we will be better. We also need to learn to deal with emotions because the research is really clear that most of us are not dealing with what emotions the people we're working with are dealing with. And you can see from the two studies that I cited here that if we don't deal with emotions, it doesn't mean they go away. If we try to work through them quickly, it doesn't mean that they are gone. Sometimes they fester and they come to bite us later. These are issues we deal with on a micro level in our academy, but we deal with them on a larger issue in our communities, in our nations, and in our world. Simon and Gutzel did some really interesting work in neuroscience to look at once we start dehumanizing other people, calling them names and not recognizing and honoring their humanity that they have, we no longer treat them the same. And cognitively, we start treating them
as less than human, because that's what the way our brain has switched over to seeing them and viewing them. And we need to be really careful with that, because the thing that we have that's so unique and so important is our humanity. And we need to realize we are in all parts of the world, just like you know, your kind organizers brought me here. We are all ultimately connected and we need to work together. Multidisciplinary approaches and all the good work you're going to do at your conference over the next many hours allow us to do so many good things. Everything helping deal with social problems, building connections, seeing issues and how we can address them in many different ways and many different levels. Each of you are seen as leaders in your campus, in your community, in your country, and a multidisciplinary approach in your ability to deal with conflict makes you perfectly poised to be the kind of people who can really make some positive change. They also allow us to work together. And it just thrills me to see so many wonderful faces. And I wish I could only be there with you. But I get a chance to see you for a few minutes because you have an opportunity to come together and to talk about things that may even be difficult conversations, but ways you can learn to work together even better. And then you can go on to model this for your colleagues and other people. As academics, our ability to value other ideas, to resolve conflicts, to work across disciplines can make a difference. This conference is just an example of that. Mahatma Gandhi said that peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. And I think he was right, but I would add something more. I would say peace may only be realized when we learn from it, when we embrace the lessons we get from it, and when we use it to grow together. I think I've stayed in time. I appreciate this opportunity so much. I wish you all great success and wonderful conversations with each other, and I am so humbled to be here. Thank you all so very much. You can connect with me on Facebook and LinkedIn. It is a smaller world that way, but thank you so very much. I'm very humbled. Ma'am, your work has been a source of enlightenment and a beacon of hope and a call to action. We sincerely thank you for sharing your wisdom with us and being a part of today's event. Please have a great round of applause for Dr. Hannah. Thank you so much, ma'am, for joining us. We would be very grateful to you if you could continue with the inaugural event. We'll be starting with the other addresses. If you have the time, please stay on with us. Oh, I wish I could, but it's about 2 o'clock in the morning here. Oh, that's fine, ma'am. Thank you so much for joining us, ma'am. It was a great Sure. opportunity to hear you. Such a pleasure to be here. Thank you so much. We have a
Now, with utmost reverence and gratitude, we warmly welcome our esteemed chief guest, Dr. Saroj Sharma ma'am, guest of honor, Dr. Dhananjay Joshi sir, director, Dr. Sachin Yadav sir, and our convener, Dr. Rekha Mahajan ma'am. Graciously ascend the stage where we hope to express our deepest appreciation for their presence. We also humbly request our honored guests to take their designated seats where personalized nameplate await them. Ma'am, sir, please. Please be seated, sir and ma'am. Thank you so much, sir and ma'am. Now, I humbly request Dr. Rekha Mahajan ma'am to honor our chief guest, Dr. Saroj Sharma ma'am, with a token of our deepest gratitude. A great round of applause to ma'am. I also humbly request Director Sir to kindly present a lovely plant, a gracious sword, and a memento to our esteemed guest of honor, Dr. Dhananjay Joshi sir, as a token of our deep appreciation for his distinguished presence. Honor Director Dr. Sachin Yadav sir with a heartfelt welcome for today's conference. Ma'am and sir, I request you to please take your seats. Thank you so much, ma'am and sir. Now, moving forward, Dr. Amit Gupta sir, Chairman of GEMS Group of Institution, is a multifaceted individual and esteemed educationist, scholar, and sports enthusiast, holding a doctorate from GGS Indonesia University and trained at Stanford and Babson University. He founded GIMS with a vision to make education relevant and modern. His institution has expanded across Delhi, Haryana, UP, and Rajasthan with a private university in Jaipur and Bahadurgarh. Dr. Amit Gupta sir's accolades include Outstanding Intellectuals of 21st Century by International Biographical Center, Cambridge, Man of the Year by American Bibliographical Institute, Shiksha Ratan Award and Gold Medal by Institute of Economic Studies. He is a member of EO Rotary International and Roundtable and was honored as an outstanding Rotarian for his humanitarian services. Our Honorable Chairman, Dr. Amit Gupta sir, is unable to come with us today. He has conveyed his best and utmost wishes to all present here. Now, we are thrilled to unveil the sovereign for this event, and I request all the designated guests to open the sovereign. Please have a round of applause for all members.
Thank you so much, ma'am and sir. Please be seated. As we bask in the glory of your wisdom, I am delighted to introduce the feast day residents of gathering, the distinguished guest of honor, Dr. Dhananjay Joshi sir, a luminary in realm of education, whose presence is sure to elevate our conclave to unprecedented heights. Professor Dr. Dhananjay Joshi sir, a visionary educator and stalwart in the realm of education, has dedicated 20 years to shaping minds at Delhi Teacher University, where he serves as the Vice Chancellor, guiding numerous M.Ed and PhD scholars with a distinguished career spanning various academic positions, including founding faculty member and a rich educational background, including a PhD in education from the University of Delhi. He has authored numerous books and research papers showcasing his expertise. Professor Dhananjay Joshi sir's presence extends beyond academia as he engages with institutions, governmental organizations, and media, offering insightful perspectives on education and societal issues, and is also a celebrated Hindi poet with published work and a YouTube presence. With a heart full of gratitude and a mind full of wonder, we welcome the sage of scholarship, a beacon of brilliance, and icon of innovation, our Honorable Dr. Dhananjay Joshi sir. Sir, please. Very good morning, one and present over here. Namaskar. The GIMS Engineering Management and Technical Campus. I congratulate to the all management, chairperson, faculty for hosting this international conference on a very important theme. Research and innovations in the field of management, media, science, technology, education, legal issues in the context of 2024. I humbly pay my regards to the chief guest of the day, our elder sister, Professor Saroj Sharma ji. I also pay my regards to Professor Mary Lou Brent Frank from McCullough University, Lithuania State, USA, for talking on a very important theme of conflict management. And she has aptly given so many thoughtful, reactions on this very important theme of multidisciplinary conference. I also give my regards to the chairman, Dr. Amit Gupta ji in absentia, the campus director, Professor Dr. Sachin Yadav, who has delivered the welcome address. Our very own friend, Professor Dr. Rekha Mahajan, who is the convener of this conference organized by GIMS, and as well as luminaries, those have been invited, Professor Behel and other, colleagues, those who are the part of this very important and challenging, I can say that, the conference. While I was coming, I was thinking that what I will share with the young minds, because India is a country of average 35 years. We are the 5th global economy and will be soon touching the 3rd important economy of the world, which our Honorable Prime Minister and government is working very hard. And our government has given the roadmap of Viksit Bharat at the rate 2047. We are still considered a developing country. When I was a student, I used to tell by my teachers, my parents, that we are a developing country. Now still we used to tell our students we are a developing nation. When we become a developed nation, we would like to have this answer, and this answer has been given by APJ Abdul Kalam in his book of 2020, and where he has written Viksit Bharat concept, and he has brought the line that India should be developed by 2020. Now we are in 24, and now our honorable government, Prime Minister, all the state governments have taken one agenda that we must work towards the Viksit Bharat at the rate 2047. But that is not sole agenda of any government. This is not the sole agenda of only Prime Minister.
This is the agenda of the all Indian people. This is the aspiration of all India. All people of those are living here. And my dear friends, that is very important that for that we have to the Panch Pran, the 5-element pledge which we have taken in just last 15 August 2023, when India attained its 78th were the nation, and that pledge, our Honorable Prime Minister said, we have to take this Panch pledge, and this Panch Pran pledge said, remaining trace of global India. We have to work towards global India. Then we have to come out from the colonization and colonial mindset. We have to come out from colonial mindset. Then we have to take pride on Indian legacy. Then we have to take pride on Indian culture and our Indian ethos. Then we have हमें पंच प्राण की प्रतिज्ञा लेनी होगी और ये पंच प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉलोनाइजेशन से ऊपर नहीं आएंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से ऊपर नहीं आएंगे, अपनी संस्कृति पर, अपनी शिक्षा पर गर्व नहीं करेंगे, तो हम इस देश को एक विकसित भारत नहीं बना सकते। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज fulfilling our own duties as citizens. That is very, very important. Only government cannot do it alone. We always ask that what are my rights, but we always forget my duties. That is very important, that we should also think what are my duties, which constitution has given me the fundamental rights as well as my fundamental duties enshrined in Article 15 or 51A. We must ask what are my fundamental duties. We should always be asking about Part 3 of the Constitution, which talks about fundamental rights, but we should be saying about directive principle of state policy as well as our constitutional duties. John F. Kennedy said to Americans, don't ask only about right, what America has given to you. You should ask that what we have given back to the America. Simply is asking that what nation has given to me, it will not solve our problem. No conference will answer this question. This we have to answer ourselves. That's why these Panch Pran, enforced by our Prime Minister, enforced by the government, is very, very important in today's scenario. The Indian diaspora, which are living outside the world, is working so hard. Every 7th Indian outside in India. Ambati brothers were the first doctors. And there were every 7th citizen outside who are proudly saying, I'm an Indian. And we have done so much wonders in every developed country. Like in America, the success story goes through the India. The Australia, the success story comes from the Indians. The Canada, the success story comes from Indians. That's why every 7th Indian is outside of India. And this Indian diaspora is working so hard. But we should not forget that. Somebody has been, one of my friends has written an X. Earlier it was a tweet. That was a tweet. He said that the best of Americans are working for America. The best of Chinese are working for China. The best of Japanese are working for Japan. The best of Germans are working for Germany. But the best of Indians are not working for India. They are working for others. You have to ask that. The thing which we are saying, the nation first, Rashtra Pratham. भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं. Recently we have celebrated our 78th Independence Day. If Homi Jahangir Baba has decided to settle in NASA, he could easily settle. Vikram Sarabhai has been awarded the scholarship, and he really relinquished that scholarship. APJ Abdul Kalam को NASA से बुलाया गया. But he was the missile man of India. Later became India's 11th president. And he has given 5 missiles, and that's why known as a missile man. Agni, Nag, Trishul,
एक से एक बढ़ गया. And in the area of nuclear physics, we got so many, acclamation and applause from the world community. In 1971, by Pokhran explosion came, all the sanctions have been impulsively has done against India. And again, when India became in 90 and 98 at the time of Atal Bihari Vajpayee, the second Pokhran explosions for gaining not only nuclear power, but we want that to show the world that we are the world's best country in the field of science and technology, where Takshila and Nalanda universities were there. And still these Takshila, Nalanda universities are existing. Takshila not in India. You must be knowing that it's in Rawalpindi, where great Chanakya was born in Takshila University under the domain of Pakistan. Vikramshila, Vallabhi, Kathiawad, these were the centers of learning. In Nalanda, there are 8-fold path library which has been burned by Bhaktiyar Khilji. And he traced all the things. Rahul Sanskar, Google it, who is Rahul Sanskartyan. He has written a beautiful book, Volga to India, Ganga to Volga. And he collected all our Vedic literature which has been burned in Nalanda. And that has been translated to Pali and Prakrit. And whole life he has done his work for translation. And for 36 years he has just traveled. Hensang Fayan came in India. They have written that it's a great country. We have given sensitization and civilization to our neighboring nation China. Confucius has written in these texts that India has given us light of, ray of hope and enlightenment. And which considered China one of the biggest civilization counterpart to Indians. But हमने उनको ज्ञान में, हमने उनको विज्ञान में सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी ने दी थी तो भारत ने दी. वो देश तो अभी भी आप अगर देखते होंगे तो अभी जो वुहान में जो आया कोरोना तो उन्होंने कैसे कोरोना को फैलाया. हमने संस्कृति उन्हें दी, हमने शिक्षा उन्हें दी. इसीलिए उस फिल्म का जो गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई. देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था. धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था. पहले जन्मी थी जहां पे कला, पहले जन्मी थी जहां पर संस्कृति. मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे सब संसार चला. दिस इज इंडियन कल्चर, दिस इज इंडियन सिविलाइजेशन. The whole world is looking at us. Our Prime Minister been to so many countries. Yesterday he was in Poland, and after 54 years, any state, leader been to Poland, Warsaw. You read today's newspaper, how he got, welcome, standing ovation, because Poland के लिए इंडिया ने जो किया, जामनगर के राजा ने जो किया, जिसके बारे में इतिहास में कभी पढ़ाया ही नहीं गया, वहां भी जामनगर स्क्वायर है. तो भारत ने विश्व के हर देश की मदद करी, बिना इन्वेजन के, बिना आक्रमण के, आक्रमण खाकर के भी. 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता. So I am calling here that this multidisciplinary conference should address about these, work which Indians has done as past, what our leaders have done in past, and I greatly admire Professor Frank when she is talking about what is multidisciplinary approach, and I was writing her point. She said, it's rightly said, if she is here in this conference and joined through the Google Meet, I appreciate her. She said that we must acknowledge current socio-political world order. We are living in a global cosmopolitan world. In India is very beginning we are saying about Vasudhaiv Kutumbakam. ये बात तो हम सदियों से कहते आए हैं कि सारा विश्व एक गांव है. आज अगर एक बांग्लादेश के समय एक समस्या आ गई तो उससे केवल और केवल बांग्लादेश ही अछूता नहीं है, उससे भारत भी कहीं न कहीं उससे उसको समस्या, वहां की समस्या से भारत में भी समस्या आती है. जब 71 में बांग्लादेश की समस्या आई तो 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अकेले भारत आ गए थे. जब भारत की सेनाओं ने जाकर के वेस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बना दिया. लेकिन कभी ये सभी देश भारत का पार्ट हुआ करते थे. भारत के अगर नक्शे को देखिए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, 17वीं शताब्दी के नक्शे को देखिए तो सब अखंड भारत थे. तो इंडिया कॉस्मोपॉलिटिकल नेचर, जो इंडिया का जो पूरा इंडियन हिंद महासागर का जो एरिया है, आज एक ट्रबलसम एरिया है. इसको ट्रबलसम कैसे बना दिया गया, इसके पीछे कौन ताकतें हैं, क्या वर्ल्ड ऑर्डर है, ये तभी सभी चीजें इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को पढ़ने की.
जो अमेरिका 17वीं सेंचुरी में आजाद हुआ और भारत 5000 वर्ष पुराना देश है, कैसे हम एक डेवलपिंग नेशन में तक पहुंच गए? क्या वजह थी डेवलप्ड नेशन को डेवलपिंग बना दिया गया, जहाँ सोने की चिड़िया होती, जहाँ डाल डाल पर बसती सोने की चिड़िया, जो एक गाना है, हम एक सोने की चिड़िया से कैसे इतना पीछे चले गए? जब 12वीं शताब्दी में अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली भारत में आता है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का वर्ल्ड में 70% जीडीपी होता है। और जब अंग्रेज भारत से जाते हैं 1947 में, तब $1 1 रुपए के बराबर था, और आज ₹1 और $1 85 रुपीज से के ऊपर है, पाउंड सम से ऊपर है, 92 के प्लस है। जब रुपये पे रुपये यानी हमारी करेंसी हमारे डेवलप होने की निशानी है। आप सभी इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, जब वर्ल्ड में हमारा 70% कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री में, व्यापार में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो हम इतना पीछे कैसे चले गए? वो कौन सी बात थी जिससे हम इतने पीछे चले गए? तो इन तमाम बातों को समझने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना होगा कि वो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें आज हम रह रहे हैं, और हम कैसे असर्ट करना है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और अपनी इकोनॉमी को हमने, अपनी एचआर को अपनी ताकत बनाना है, अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट हैज बीन, शी हैज राइटली पॉइंटेड आउट, वी मस्ट टेक बेनिफिट ऑफ आवर जियो कैपिटल, आवर पॉपुलेशन। जो हर भारतीय बाहर जाके काम कर रहा है, भारत के लिए सपने बुन रहा है, अपने घर के लिए सपने बुन रहा है, जो गिरमिटिया बना करके लोगों को यहाँ से ले जाया गया और पुर्तगाल के रास्ते को ले जाके फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में छोड़ दिया गया, तो आज भी कहीं भारत में ही अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को जो देखते हैं। अरविंद राम गुलाम वहां के राष्ट्रपति भारत आए, तो आने के बाद सबसे पहले वो बिहार में गया गए और वहां जाके उन्होंने अपने पूर्वजों की धरती को प्रणाम किया। ऐसे ही आप जितनी वेस्ट इंडीज की कंट्री जाए अभी, जहां पर आपका 2020 आयोजित किया गया था, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहां सारे के सारे सिस्टर्स इंडिया से गए हैं आप। तो वर्ल्ड के हर देश में एक इंडियन बसता है, और वो ये चाहता है भारत विकसित बने, एक विकसित राष्ट्र बने। लास्ट ईयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी
के विषय में जो विश्व ने हमेशा से दिखा, वो हमारे भारत की यही सुंदरता रही है कि हमने सदा विश्व को लीडरशिप दी है। हम सदा विश्व गुरु रहे हैं, हम नॉलेज में सबसे आगे रहे हैं, और इस नॉलेज इकोनॉमी को अगर हमने बढ़ाना है तो हमारे को इस ओर प्रयास करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि बात बहुत कुछ की जा सकती है, बट आई अगेन कांग्रेचुलेट द organization, the management, the gyms for taking a very important cause of agenda of education. And I'll conclude here with Delors Commission's the saying which said we have to work through learning to know. सबसे पहले हमने बच्चों को सिखाना है कि हम कौन हैं। जैसा कि हमारे बड़े प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि ने कहा था कि हम कौन थे, हम क्या हैं और क्या होंगे अभी, आइए मिलकर विचारें समस्याएं सभी। ऐसा ही डेलिवर कमीशन ने कहा, लर्निंग टू नो, then learning to be, then learning to do, and the last learning to live together. We have to work toward learning to live together. And with that note, I always have faith on our young generation, because this young generation has a potential. This young generation has an ideas. We are working very nicely because of the young minds are coming, leadership. And for that, India is a great country. I again congratulate to the organizers for having this wonderful conference. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your words are such a wonder. Your insight have truly inspired us, and we are so grateful for your presence. Please have a great round of applause for sir. Now, it is our honor to welcome the distinguished chief guest, Professor Dr. Saroj Sharma Ma'am, Chairperson of National Institute of Open Schooling, NIUS, Noida. Professor Saroj Sharma Ma'am is an exemplary academician and administrator. She has been leading NIUS since December 2020, with her vast expertise in steering institutions offering B.Ed and M.Ed degree. Her distinguished career is marked by the membership in illustrious academic bodies, including NET, and collaboration with revered organizations such as UNICEF and UNESCO. Under her visionary leadership, NIOS has been facilitated with prestigious UNESCO King Sejong Literacy Prize 2021, recognizing its exemplary inclusion education initiatives. Everyone, please join me in extending a warm welcome to respected Professor Dr. Saroj Sharma Ma'am as she prepares to address us. Ma'am, please. First of all, I go my next word goddess of wisdom, Ma Saraswati, Professor Dhananjay Joshi, Honorable Vice Chancellor of Delhi Teachers University, who is sitting on the dais, and you all have listened such an enchanting talk from him. Director of this organization, Professor Sachin Yadav, and Rekhaji, you have convened so nicely. I can see Justice Bahel over here also, and all the faculty members. And reason for this conference. Dear students, scholars, warm greetings, and I extend my congratulations to JIMS and also its leader, Mr. Amit Agarwal. Today, the world has become a global village. And the topic is very relevant. That is based on recent advancement and innovations in management, media, science, and technology. Very nicely, Professor Joshi has elaborated upon various aspects where Vishwa Bandhutva, towards Vishwa Bandhutva we are leading. And Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramya is our philosophy, Indian philosophy. And that too, when we talk about National Education Policy 2020, after a long gap, we are witnessing. Just a simple question. How many of you have gone through the policy draft?
Only, I can see only 5-6 hands. So this is the sad picture of education. See, there are 8 apex bodies in India and I am representing one of them, and we are into implementation process. In 2016, this policy was there in the buzz, and in 2020, it took a shape. And it was launched by then Education Minister, Dr. Nishank Pokhariyan. It was a long debate across India, and output, input, and suggestions of every sector was taken. लाखों की संख्या में आते थे सजेशन और एक-एक सजेशन पे मंथन हुआ. And this is the reason when this policy came, एक भी जगह से विरोध नहीं हुआ. बात अलग है कि एक दो स्टेट्स अब ड्यू टू पॉलिटिकलिज्म दे आर जस्ट ट्राइंग टू मलाइन इट और हम नहीं मानेंगे इस तरीके की बात कर रहे हैं, मगर देन कहीं भी विरोध नहीं हुआ एकेडमिया में. एंड व्हाट डज इट टॉक? आई रिक्वेस्ट यू ऑल जो यहाँ बैठे हैं, आज हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे तो बाद में हमें कहने का कोई अधिकार नहीं होगा कि पॉलिसी में क्या है हमें पता नहीं, हमारे हमसे पूछे बिना कर दिया. ठीक है ना? तो पढ़िए आप लोग. और जिस ह्यूमन कैपिटल की बात होती है, जिस विकसित भारत की बात होती है, आप वर्ल्ड के उस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा यंग माइंड है. And when we talk about young mind, AI intervention is there. Snapchat तो आप सभी परिचित है, मुझे सीखना पड़ेगा आपसे Snapchat. Is it so? How much time we spend on WhatsApp? No doubt another university is that. How much time we spent on Reels? The professor in the beginning, she elaborated much on this, and I was just looking after 40% of the time we spent on media. So how to channelize this interest? जब आप बात करते हैं recent advancement की मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कुछ नहीं. और MBA students are here, कुछ हैं इसमें MBA के, BBA हैं. चलो somehow मेरे पास भी एक MBA की डिग्री है apart from B.Ed, M.Ed and MA Sociology. When I started, मुझे MBA करना था तो एक प्रोफेसर थे, वो मेरे डिसर्टेशन के गाइड थे. उन्होंने मुझे कहा कि MBA is nothing but a balance between human resource management, physical resource management and financial resource management. Human resource management, right person at the right time at the right place. फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारी चीजें हैं. स्टूडेंट्स आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, आपकी सीट्स अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी जुड़ गए. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स कितनों ने आप में भरा है? अभी कुछ लोगों ने नहीं भरा होगा. जीएसटी लॉस क्या है पता है लोगों को? लॉ प्रोफेसर भी बैठी हुई थी, she was discussing with me कि even IITs have started law. So I had a brief discussion कि ये IITs हैं, इनका technological field है, why they have started? Don't you think कि they should confine? Then she said कि corporate में भी बहुत कुछ होता है and many things, that kind of interventions are there. So interdisciplinary approach and multidisciplinary approach is come in the field of education, and this is what national policy says. Access, equity, quality, skill development and value education, that too under the ambit of Bharat Kendrit Shiksha. I'm not talking about India-centric education. When we talk about Bharat Kendrit Shiksha, the 60% youth of the world, आप सब लोग,
आप सब उसमें आते हैं जहां पे आपको टेक्नोलॉजी का है, जहां पे आपके लिए प्लेंटी ऑफ एवेन्यूज आर देयर। हमारे टाइम तो बस यही होता था, आपके नंबर अच्छे आए हैं, आपको साइंस साइड डाल दिया गया, एमएससी तो बस कर लिया ऐसे ही। Now my daughter says I'm not interested in becoming doctor or engineer. मैं तो आर्कियोलॉजी में जाऊंगी। हमारे टाइम इतने एवेन्यूज नहीं थी। यू हैव प्लेंटी ऑफ एवेन्यूज। मीडिया की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है। मुझे नहीं मालूम सरोज शर्मा, नेक्स्ट टाइम आप एआई के सरोज शर्मा यहाँ इकट्ठा कर। अंजना ओम कश्यप को तो आप सुनते हैं, उनका एआई वर्जन। सुधीर चौधरी का भी कभी कभी एआई वर्जन आ सकता है। तो हो सकता है मंत्री जी मुझे मीटिंग में बुला ले अगली बार और रेखा जी यहाँ पे मेरा एआई वर्जन ले आए, प्रोफेसर जोशी का एआई वर्जन ले आए। हम यहाँ आ गए नहीं, मेरी आवाज क्लोन हो जाती। रोज मेरे पास फोन आता है, आपके बैंक अकाउंट आपका ये हो गया है, आपके एयरपोर्ट पे आपका एक पार्सल आया हुआ, आके ले जाएंगे। पूरा का पूरा मुंह का जो साइबर वर्ल्ड है, जो बैठ के यहाँ पे मेरे आवाज की क्लोनिंग कर रहे हैं। See, there are two aspects. One is negative and one is positive. So जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं अक्रॉस वर्ल्ड, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है, मैनेजमेंट वालों ने पढ़ा होगा। हाउ टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। एक कंपनी थी, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हो रहा था 17th-18th सेंचुरी में, मैनेजमेंट का एजुकेशन कैसे आया इसकी आपको मैं हिस्ट्री बता रही हूँ। लिबरल्स काम कर रहे थे, कैपिटलिज्म अपने शबाब पे था। लिबरल्स काम कर रहे थे और बेसमेंट में काम करते थे। नया मैनेजर आया, मैनेजर वर्ड भी बाद में आया। नए मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे पानी की कमी है, हवा नहीं आ रहा है, इतना डैम्प माहौल है, इनको आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। हवा पानी आने लगा, प्रोडक्शन डबल हो गया 1 महीने में, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। सो दिस इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जब नीड हायरार्की की बात होती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर फैसिलिटेशन से मोटिवेशन भी आता है। अब मुझे रेखा जी ने दायित्व दिया है कि मैं बोलूं कि रिसेंट इंटरवेंशंस क्या क्या हुए हैं। आप सब बोलेंगे आई नो देयर आर वेरियस पेपर्स एंड इंटरनेशनल पेपर्स आर आल्सो देयर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसेंट इनिशिएटिव्स, प्रोफेसर जोशी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि हमने किन किन फील्ड में एडवांसमेंट किया है और हमारा एंशिएंट विजडम हाउ दैट इज लीडिंग टू अस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर। अभी भी अजंता अलोरा देखिए, आप दक्षिण का हम्पी जाइए, सिर्फ ताजमहल और कुतुब मीनार तक आप मत रहिए, जाके हम्पी देखिए कितना आर्किटेक्चर हमारा डेवलप था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य की मूर्ति पे जो है सबसे पहले सूर्य की किरण आती है ईश्वर की मूर्ति पे। अभी भी जगन्नाथपुरी का झंडा उल्टा हवा के विपरीत क्यों है? जो साइंस था, जो कड़ाक थे, जिन्होंने केमिस्ट्री दिया था, नागार्जुन को केमिस्ट्री का गुरु कहा जाता है, जो एटॉमिक थ्योरी हमने दुनिया को दी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने दुनिया को दिया। बाद में जब 17th-18th सेंचुरी में डार्विन की फिलॉसफी आती है, कणाद इज मच एडवांस, जो कहता है कि एटम इज डिविजिबल। सो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से जीरो नहीं दिया, हमने पूरा का पूरा पाई दिया है, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम दिया है दुनिया को, पूरा अलजेब्रा दिया है, जो यहाँ से अलजब्र कहलाया अरब में जाके। अर्थमेटिक शल्ब, जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, दिस वाज गिवन बाय इंडिया। भाई आपका ऋग्वेद में तो पहला श्लोक ही है जो कहता है कि सूर्य 7 सफेद घोड़ों पे सवार है। व्हाट इज दिस सफेद? आप में फिजिक्स के कितने स्टूडेंट हैं? सो व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट? व्हाइट। एंड हाउ मेनी लाइट्स आर देयर? 7। तो 7 घोड़े सूर्य के क्या हुए? 7 रंग हुए जो सफेद बने। तो ये फिजिक्स तो ऋग्वेद से आया है हमारा। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, रिसेंट इनिशिएटिव्स, उसका एडवांस हो गया, वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस। जो थर्ड इकोनॉमी बनने की हमारी बात हो रही है, डिफेंस में हम सेकंड होने जा रहे हैं।
होने दीजिए लड़ाई यूक्रेन में और रशिया में, होने दीजिए जहां भी हो रहे हैं, हम शांति के दूत हैं। हम पीस मेकिंग का काम करेंगे, और शायद मोदी जी अभी गए हैं तो वो इसीलिए गए हैं कि कैसे दुनिया में शांति। अगर हम भी यही सब करेंगे कि तो हमें भी बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान जहां रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं वो बनना। सो लेट्स बी एडवांस इन दिस फील्ड। जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं, सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है डिजिटल इंडिया, और पीएमजी दिशा एक प्रोग्राम है जो एनआईएस कर रहा है। हमने 2.25 करोड़ विलेजर्स को, जो ग्राम पंचायत के थ्रू हमारे सेंटर में सीएससी गवर्नेंस के थ्रू 2.25 करोड़ लोगों का सर्टिफिकेशन किया है। ये प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान है। तो ये मत सोचिए कि हम जो सिटीज में है, मेट्रो में है, वी आर मच एडवांस और हम इस जनरेशन को लीड कर रहे हैं। सब्जी लेने चाहिए, कोई सब पैसा तो लेके मैं भूल ही गई हूँ। हर सब्जी वाले के पास पेटीएम है। माय डॉटर इज गोइंग टू डरहम यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंथ, और उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि वहां पेटीएम नहीं है, यूपीआई सिस्टम नहीं है, ओला उबर नहीं है। क्या है? आप ही लोगों ने तो स्टार्टअप शुरू करे हैं, द यंग माइंड्स। डोंट यू थिंक इट इज डिजिटल एडवांसमेंट? ये है। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन। बहुत अच्छे से अब्दुल कलाम जी की बात हुई। उन्होंने जो लौ जलाई, पूरी बिंदी ब्रिगेड थी ना चंद्रयान की, कहाँ पहुंचा दिया हमें उन्होंने? सिंपल लेडीज विद इग्नाइटेड माइंड। आपको नहीं लगता हम चांद तक पहुंच गए हैं? और जो उसके साउथ पोर्शन तक कोई नहीं पहुंच ना पाया, वहां हमने अपने कदम रखे हैं। दिस इज द रीसेंट एडवांसमेंट। हम सूर्य तक पहुंचने वाले हैं। सोलर एनर्जी पे इंडिया वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ धूप प्लेंटी है, विंड बहुत है। वेल, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। देन हेल्थ केयर इनोवेशंस पे काम हो रहे हैं। हेल्थ टूरिज्म, इंडिया इज अ हब ऑफ हेल्थ टूरिज्म। इलाज सस्ता है, पूरी दुनिया से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। वर्ल्ड का क्लास मेडिकल फैसिलिटीज वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड। Then when we talk about agriculture advancement, agri-tech startups have taken place. Recently मुझे, आप में से कुछ दक्षिण भारत के लोग भी होंगे, कार्तिकेय का जन्म स्थान दक्षिण भारत में है, वहां मुझे बुलाया गया। देयर वाज अ गुरुकुल कॉन्फ्रेंस अक्रॉस इंडिया। 5000 गुरुकुल के रिप्रेजेंटेटिव वहां थे, और आपको विश्वास होगा, हर गुरुकुल में एक आईआईटीएम था जो अमेरिका की जिंदगी से तंग आ गया था। सिलिकॉन वैली में उसने काम किया, पैसा कमाया, और उसे लगा कि उसका देश उसे बुला रहा है। अब फूड चेन आप पढ़ते हैं ना, फूड चेन में कैसे बना, उसको बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया। हमने बायोलॉजी में पढ़ा था इसको 9th स्टैंडर्ड में। मुझे लग रहा है कि जॉब चेंज हो रहा है। आईआईटी के आप आईएम कर लेते हैं, अच्छा पैकेज मिल जाता है, बाहर चले जाते हैं, काउच पोटैटो बन जाते हैं, साइबर हब में रात दिन बैठे रहते हैं। उसके बाद देश बुलाने लगता है, और आप यहाँ आके क्या करते हैं? जमीन खरीद लेते हैं, पैसा तो है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर। ये गुरुकुल के आईआईटियंस जो विदेशों से लौट के आए थे, और जिन्होंने अपना एंशिएंट इंडियन विजडम पढ़ना शुरू किया, साइंटिफिक एडवांसमेंट शुरू किया, दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन गुरुकुल। और संस्कृत के जो कपि कपूर जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, और एंशिएंट इंडियन साइंसेस पे, एंशिएंट इंडियन नॉलेज पे उनका काम है। एंड हमारे एनआईएस में ही वाज इनवाइटेड वंस, विद्या भारती का कॉन्फ्रेंस था, उसमें आए थे। उन्होंने कहा था 93% of the Indian scripts, Indian manuscripts have not been read. पाली प्राकृत तो रिसेंट है, बुद्धिस्ट स्टडीज के हैं, उनको तो फिर भी थोड़ा सा पढ़। हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, रिसर्च करने वाले लोग नहीं हैं। जो 7% है, जो हमारा जला दिया गया,
हमारा ज्ञान लाइब्रेरी 6 महीने तक नालंदा की जलती रही, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। हमारे ज्ञान को खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया को हमने तलवार से नहीं जीता, ज्ञान से जीता। मौर्य काल तक हम ट्रेड में आ गए थे, गुप्त काल में हमें सोने की चिड़िया कहा गया। पोत हमारे रामायण काल में थे, महाभारत में अग्न्यास्त्र, प्रक्षेपास्त्र और एटॉमिक वॉर कहते हुए हुआ था उस समय। अभी भी कुरुक्षेत्र का जो लेवल है वो ज्यादा है, वहां पे एटॉमिक का रेडियो एक्टिविटी वहां पे ज्यादा है। So what I mean to say, I'm not going to elaborate much, मगर मेरा ये कहना है कि जो एडवांसमेंट, we are going on the right path। मैं बात कर रही थी स्किल डेवलपमेंट की। 46,000, मैं बड़ी बड़ी बात आईआईटी की अब नहीं कर रही हूँ, जो स्किल की बात होती थी। ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, अगेन हम विल से जो ग्रास रूट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में 46 लाख, एंड आई मीन इट, 46 लाख of laborers in unorganized sector। कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। NIOS is certificating them। स्किल इंडिया का जो था वो अब उल्लास कहलाता है। न्यू इंडिया लिटरेसी मिशन, इसमें स्किलिंग भी हो रही है। तो जब आप मैनेजमेंट में ये बात करती हैं, तो भारत के आप ये मानिए कि 46 लाख का सर्टिफिकेशन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम मेट्रोज में ही स्किलिंग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्किलिंग हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लीगल एंड regulatory reforms। Though legal studies is not part of national education policy, legal पे उसमें बात नहीं की गई है, उसको अलग छोड़ा गया है, उस पे कुछ और होगा। मेडिकल काउंसिल की भी बात नहीं हुई है। Yes, management is there, engineering and technology is there। लीगल में जो काम हो रहा है उसमें आप यहाँ बैठे हुए हैं, बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपके लीगल के एक्सपर्ट्स बताएंगे, उस पे काम हुआ है, उस पे हम आगे बढ़े हैं। लेबर लॉ रिफॉर्म्स हुए हैं, और कैसे डिजिटल, आज से 5 साल पहले आप सुन सकते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन हो रही है, आज होता है। हम देखते हैं वहां पे किस तरीके से लॉयर, आप क्लिक करिए कोई पर्टिकुलर केस का नंबर डालिए, जो प्रोसीडिंग्स हो रही है यू कैन सी। सो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। सो ये जो एडवांसमेंट है, देन डिजिटल कंटेंट एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अब तो थिएटर गई अरसा हो गया, सबको पता है पंचायत में सचिव जी क्या कर रहे हैं, सबको पता है आर्या मैं सुष्मिता सेन क्या कर रही हूँ। लॉ पे एक अभी बहुत अच्छा आया था, मुझे नाम नहीं याद है। तो प्लेटफॉर्म घर घर पहुंच गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था ना, एशियाड में हमारे घर में कलर टीवी आया तो पूरा मोहल्ला आके आता था कि चित्रहार और पिक्चर देखे। आप लोग कुछ जो होंगे मेरे उम्र के वो रिकॉल कर सकते होंगे, और आप लोग अपने घर के बड़ों से पूछिएगा स्टूडेंट्स। नाउ ओटीटी हैज कम, इट इज अ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देन रिसेंट एडवांसमेंट में फिर हम देखेंगे इनोवेशन क्या हो रहा है, एडटेक and online learning. You all are familiar. Thanks to Corona also, though it is in a wrong way, मगर कोरोना ने हम हर किसी को टेक्नो से भी बनाया। Zoom क्या था हमें नहीं पता था, गूगल पेज क्या है नहीं पता था। We are much used to। और एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ चीजों को जो मैं फ्रेम कर रही हूँ, हमारी टीम फ्रेम कर रही है, उसमें हम इन सारी चीजों को ला रहे हैं। Teachers should be equipped upon these new technological advancement, जिससे उसके क्लास के लिए बहुत यूजफुल हो। Then micro credentials and lifelong learning, it is a recent trend। AI in education, जो मैं चैट जीपीटी की बात कर रही थी, बहुत कंसर्न रहता है प्रोफेसर जोशी हमारे लिए कि हमारे स्टूडेंट्स बीएड तो हम करा देते हैं, मगर जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता।
लीड एप्लीकेशन है यहाँ, गुड और बैड। कुछ सीखना है तो चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से करेक्ट कर देगा। इसके बहुत प्लस पॉइंट भी हैं, बहुत माइनस पॉइंट भी हैं। अब यूनिवर्सिटीज के लिए चैलेंज है कि जो पीएचडी की थीसिस आ रही है या जो प्रोजेक्ट लिखा है, चैट जीपीटी से तो नहीं है, क्योंकि एआई इंटरवेंशन इतना ज्यादा है कि वो सही है गलत है। अनुवादनी जो ऐप है एआईसीटी का, हमारे यहाँ क्योंकि 17 मीडियम्स में पढ़ाई होती है अक्रॉस इंडिया, तो हम ट्रांसलेशन करना हमारे लिए चैलेंज होता है डिफरेंट स्टेट के लैंग्वेजेस में। अनुवादनी ऐप इज अ सोल्यूशन जहाँ पे ट्रांसलेशन हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड फेयर हुआ था, यहाँ पे भाषिणी ऐप लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने किया था। दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एनईपी कहती है भारतीय भाषाओं को आप समृद्ध करिए। मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के मराठी भाषा में एक्सेप्ट कर रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, पीएचडी डिफरेंट भाषाओं में हो रही है। यहाँ पे दीज ऐप विल बी यूजफुल इन इवैल्यूएशन पर्पस। जिस मैकॉले की बात हो रही थी कि जो कॉलोनियल माइंडसेट हमारा हो गया है, इंद्रेश कुमार जी बहुत अच्छे विचारक हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुझे आमंत्रित किया था और वहां की नजमा अख्तर जी उस समय वाइस चांसलर थी और हमारे साथ इंद्रेश जी भी थे। सभा बैठी हुई थी जैसे आप सब बैठे हुए हैं, तो एक सवाल उन्होंने कहा। आप में ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें फ्रेंच में सपने आते हैं? कितने लोग हैं जिनको मैंडेरियन में सपने आते हैं? कितनों को जापानी में आते हैं? बताइए, आप में से कोई है? जर्मन में आता है किसी को? नहीं आता। सपने तो अपनी भाषा में ही आते। अग्री विथ मी और नॉट? गुस्सा होते हो तो हिंदी ही निकलती है कि नहीं? मैम से बेशक इंग्लिश में बात करिए, दो दो जब जिगरी एक दूसरे का गला पकड़ते हैं तो हिंदी निकलती है। तो अपनी भाषा, और वो भी मातृभाषा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी बात करती है। तो जो आईटी इंटरवेंशन हो रहे हैं, चाहे अनुवादनी ऐप हो या भाषणी ऐप हो, दिस इज द रीसेंट इनोवेशन और रीसेंट इंटरवेंशन इन लैंग्वेजेस, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में या चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अ लॉट। ये सब में आपके लिए होमवर्क है। पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए, उसके बाद जो रिसेंट ट्रेंड है, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रोफेसर जोशी ने बताई। अब्दुल कलाम से लेके मेगास्थनीज की इंडिका तक पहुंचे, वे इंसान तक पहुंचे। मैत्री और याज्ञवल्क्य संवाद जो है हमारे यहाँ, डायलॉग की परंपरा, क्या सिर्फ डिग्री लेना, पेटेंट करवा लेना, दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन? Thousands of PhDs are given to the nation by different universities in India. क्या होता है उस पीएचडी का? क्या आउटकम निकला? कहीं क्या डेटा होता है? सिर्फ पीएचडी हो जाता है क्योंकि हमें तो एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। रिसर्चेस का क्या होगा? सो रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनना, और जो डायलॉग की जो परंपरा है ना, आप लोगों को कैसा बनना होगा? फिर मैं कोरोना तक जाऊंगी। कितनों ने हाथ आजमाया अपना डॉल्मो कॉफी बनाने में? आई एम श्योर, मुझे नहीं मालूम मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, शायद डॉल्मो कॉफी होता है। मैं कितनों ने बनाया? बॉयज बताओ, कितनों ने खाना बनाया घर में?
हाउसहोल्ड काम कितनों ने किया, और या जितने पति लगे पतियों की कितनी हेल्प की आपने? वैल्यू ऑफ फैमिली। हम शायद एलियन है विदेश में कि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली होती है। परिवार का महत्व हमने समझा, बच्चों ने फिर से दादा दादी की कहानियां सुनी, और 20 साल बाद 25 साल बाद मैंने लूडो खेला बच्चों के साथ, शतरंज खेला। सो फैमिली वैल्यूज जो है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, दुनिया को जब भारत सिखाता है ज्वाइंट फैमिली। अभी एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था रेखा जी, तो उसमें रिसर्च में ये कहा गया कि जो अल्जाइमर की बीमारी होती है वो बूढ़े जो घर में अकेले रहते हैं उनको ज्यादा होती है। और कहते हैं ना बूढ़े लोग सठिया गए, और 4 साल बाद मैं भी 60 की हो जाऊंगी तो बहुत बोलने लगे हो। तो कहते हैं ये रिसर्च आया है कि ज्यादा जो बोलने वाले लोग होते हैं या जो फैमिली में रहते हैं उन्हें अल्जाइमर्स नहीं होता है या कम होता है। Why? Because they can share their feelings. तो जो पंचकोश का सिद्धांत है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैसे हमारे अन्नमय कोश, हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी डेवलप होती है, प्राणमय कोश हमारी बॉडी में कैसे जान आती है, विज्ञानमय कोश, और अंत में आनंदमय कोश। हम आनंद आता है जब पढ़ते हैं, रियल लर्नर बनते हैं। तो आप सबको रियल लर्नर बनना है, सबको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी है। और एक मुझे बुलाइएगा, इनका सबका टेस्ट होगी। जब आप फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो, फैकल्टी मेंबर्स ने भी हाथ नहीं उठाए थे, तो एनईपी को पढ़िए। और इसका जो कोर है ना, भारत केंद्रित शिक्षा, उस भारत को हमें पहले समझना होगा। जब आप भारत को समझ जाएंगे, अपने परिवार को समझ जाएंगे, और एजुकेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड इनटू सर्विस सेक्टर। जैसे डॉक्टर्स का है ना कि सर्विस सेक्टर है, दे सर्व फॉर द मैनकाइंड, एजुकेशन भी सर्विस सेक्टर में आता है। समाज अपने लिए जिए तो क्या जिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हम जिंदा हैं तो हमारे नेचर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। उसूलों के लिए लड़ना जरूरी है, दूसरे के लिए जीना भी जरूरी है, और इसके लिए सही मायने में हमें लर्नेड होना चाहिए। और तभी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी का रिमोट आपके हाथ में होगा, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको नचा देगी। एयरपोर्ट से फोन आएगा कि आपके सामान पार्सल आया हुआ है, इतने पैसे भेज दो, और आप साइबर क्राइम के चंगुल में फंस जाएंगे। So we have to know how to use technology, how to manage things, and then मीडिया। मैंने एआई इंटरवेंशन की बात की, प्रिंट मीडिया खत्म होता जा रहा है, आजकल सोशल मीडिया बहुत आ रहा है, बट प्रिंट मीडिया गिव्स यू फोकस आल्सो। अनलेस यू रीड, रीडिंग मेक्स यू परफेक्ट, रीडिंग मेक्स यू फोकस्ड। सो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, एचटी है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, इनको भी जिंदा रखिए, क्योंकि अक्षरों की दुनिया से ही आप अक्षरवान विद्वान बनेंगे। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। being educated being literate doesn't mean you are educated also। मैं हमेशा कहती हूँ ओसामा बिन लादेन में बीटेक था, was he educated? So हमें एजुकेटेड बनना है, तभी जब साविद्या या विमुक्ति की बात होती है, विद एजुकेशन वी लिबरेट। सो लेट्स बी लिबरेटेड, कुरीतियों से, अंदर के द्वेष से खत्म करिए, बी लिबरेटेड। और वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारा, एजुकेशन हमें लिबरेट करेगा टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन, सर्विंग द मैन। सो बी ह्यूमन फर्स्ट। I hope this conference will bring these outcomes also, नए innovations, नए interventions के बारे में आपको पता चलेगा, and many takeaways
You will take to your home, you will take to your classroom. And yes, Kothari ji ne kaha tha कि teacher is shaping future of the mankind in the classroom. So let's move toward better future of India और हम ज्ञान महाशक्ति पर. Thank you very much. Thank you for inviting me. And many congratulations to James for organizing such wonderful conference. Everyone, please have a great round of applause for Dr. Sebastian ma'am. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your expertise and gracing us with your presence. Your insights have been precious gift, and we are grateful for the opportunity to learn from you. It is now our pleasure to invite esteemed Professor Dr. Rekha Mahajan ma'am, convener of this prestigious conference and a paragon of dedication and hard work, to ascend to the stage and bestow upon us the crowning gesture of gratitude. Ma'am, please. Thank you very much. Very good afternoon to all of you. It's a privilege and honor to propose the vote of thanks on this remarkable inaugural session of the 5th Multidisciplinary International Conference 2024. I, on behalf of the organizing committee, would like to express my gratitude to our Honorable Chairman, Dr. Amit Gupta ji, for his unwavering support to organize this conference and ignite the spark for innovation and research. My heartfelt thanks to our esteemed guests, Dr. Saroj Sharma ma'am and Dr. Dhananjay Joshi sir, for the enlightening words, and it was a captivating speech from both of you. Sincere thanks to our campus director, Dr. Sachin Yadav sir, for his constant guidance and support to organize this one. Thank you very much, sir. I would like to thank all the delegates for their valuable contribution to the success of this conference. Special thanks to our co-conveners, advisory committee, faculty coordinators of the conference for their wholehearted involvement. I'm very much thankful to all our faculty members and colleagues and non-teaching staff who have always extended the support to make this conference a success. I owe special gratitude to the admin department, IT department, and support staff who have worked very hard to ensure the success of today's conference. An event of this dimension is not organized overnight. The wheels had started rolling months ahead. And we are blessed to have a team of motivated and dedicated student volunteers with us. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness expressed to complete the tasks beyond their own comfort zone. Once again, heartfelt thanks to all of you. Thank you very much. We extend our sincerest gratitude to you, ma'am, and to all the distinguished speakers and guests who have graced us with their presence today, thereby rendering this ceremony a resounding success. Your contributions have been the catalyst for truly enriching experience. As we proceed into next phase of our program, we invite all the external authors, co-authors, and internal authors and co-authors to indulge in a well-deserved high tea break. But before that, we'd love to have a group photo with you. And for that, I request all the external authors and co-authors and internal authors, co-authors to come in front near the stage. After that, our hospitality students will guide you to the venue situated on the first floor of this building for high tea break. And I request all the students present here to move back to their respective classes. Following the
30-minute tea break. We request the pleasure of your company at the subsequent conferences scheduled to commence promptly thereafter. The venues are as follows. BTech and BCA conference will be held in this auditorium. BCA and BCom conference will be held in Seminar Hall, AB2, 3rd floor. Law conference in Moot Court, AB1, 3rd floor. B.Ed and BJMC conference in MP Hall, AB5, 2nd floor. We kindly request all guests to make their ways to their respected venues where further intellectual exploration and discussion awaits. Your punctuality and cooperation are greatly appreciated as we continue to navigate the vast expanse of knowledge and innovation that defines our collective pursuit of excellence. Thank you, everyone. I request all the students to be seated upon their places until the guest. I would like to call all the HODs for the group photograph on stage. Please, sir and ma'am. I also request student volunteers for the group photograph. All the student volunteers, please come up on the stage.